Hello everyone, I am Zinkal Patel from Rafael BCA College. Welcome you all. Now in last video we had complete unit number 2 in object oriented programming. But from today we are going to start another unit, that is unit number 3, polymorphism. Now first of all, what is polymorphism? Like in first theory properties of object oriented programming, in that one topic we had learned about what is polymorphism. In that I explained what is polymorphism. It means, now the word polymorphism means ability to take more than one form. Like in simple word, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. For example, like real life example हम ले लेते हैं, like a person at the same time we can have different characteristics. Like a man at the same time he is a father, husband or employee. So the same person can behave differently in different situation, right? So this is called a polymorphism. Now let me explain one another example, practical example. Like for example, if we want to apply plus operator on a digit, on a number, or we can say on an integer data type, like a equal to 10 and b equal to 20, then we apply plus operator, then a plus b, so 10 plus 20 equal to 30 answer आएगा. But if a and b are string, for example character हैं a and b, तो string में a equal to abc and b equal to xyz, and then plus operator अप्लाई करेंगे तो एडिशन नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्केटिनेशन होगा टू स्ट्रिंग का. सो आंसर आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड. ठीक है, दो स्ट्रिंग जो है वो जॉइंट हो जाएगी. तो यहाँ पे पर्टिकुलर ए और बी जब इंटीजर होते हैं तब एडिशन होता है, और ए और बी जब स्ट्रिंग होते हैं तो जॉइंट कॉन्केटिनेशन होता है, राइट. सो हियर ए एंड बी हैव द एबिलिटी टू टेक more than one form. String हो तो different behavior and integer हो तो different behavior. So this is called as polymorphism, right? Now in C++, polymorphism is mainly divided into two types. First one is compile time polymorphism and second one is runtime polymorphism. Now let me explain it by diagram. Like as I said, polymorphism had divided into two, that is compile time polymorphism and runtime polymorphism. Now compile time polymorphism can be achieved in two ways. First one is function overloading and second one is operator overloading. So through these two ways we can achieve compile time polymorphism. And what about runtime polymorphism? Through virtual function we can achieve runtime polymorphism. Clear? Now let me explain compile time polymorphism. Compile time polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading, and yes, this is also known as static binding or early binding. Now let me give some description about runtime polymorphism. Runtime polymorphism is achieved when the object method is invoked at the time of run instead of compile time. It means when we execute our program, this type is called as runtime, and it is achieved by the method overriding, which is also known as dynamic binding or late binding. Method overriding कैसे achieve करेंगे? Through virtual function. तो मैंने यहाँ पे method overriding की जगह पे क्या लिखा है? Virtual function. You can write method overriding also. Now let me explain difference between compile time polymorphism and runtime polymorphism. Now first point in compile time polymorphism is the function to be invoked is known as the compile time, right? अगर हमने जब कोड लिखा है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी
पता होता है कि फंक्शन कब इन्वॉक्ड होगा, ठीक है, जब इंटीजर मेन में लिखा हो तब. सो दिस इज़ नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. वाइल यहाँ पे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब पता चलता है कि फंक्शन, कौन सा फंक्शन कब इन्वॉक्ड होने वाला है, ठीक है. ये जब हम इनहेरिटेंस में मैं आपको बताऊंगी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम पॉइंटर यूज़ करेंगे तब आएगा, ठीक है. सो द फंक्शन टू बी इन्वॉक्ड इज नोन एज द रन टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलेगा. क्लियर. नाउ इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है. कंपाइल टाइम का दूसरा नाम क्या है, हम अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं. एंड दैट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट. नाउ इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म it is also known as overriding, dynamic binding and late binding. Now it is also known as dynamic binding, मतलब execution time पे कौन सा function call होगा वो पता चलेगा. And another name is late binding. And runtime polymorphism is achieved through overriding. Overriding मतलब जब हम virtual function create करेंगे तब आपको पता चलेगा what is overriding. Now in compile time polymorphism, overloading is a compile time polymorphism where more than one method is having the same name with the different number of parameters or the type of parameter. Now here as I said, हम compile time polymorphism कैसे अचीव करते हैं, थ्रू overloading. Now what is overloading? लाइक हम मैथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं. व्हेन मोर देन वन मैथड इज़ हैविंग द सेम नेम. लाइक मैंने 3 मैथड बनाई है, तीनों के नाम डिस्प्ले ही है, बट फर्स्ट मेथड जो है वो इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करता है और इंटीजर वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है. सेकंड डिस्प्ले मेथड जो है दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग वैल्यू एज अ पैरामीटर. एंड थर्ड डिस्प्ले मेथड जो है वो डबल वैल्यू एक्सेप्ट करता है एज अ पैरामीटर, ठीक है. तो मेथड नेम इज सेम बट टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर एंड their टाइप्स आर different, right? So that is known as overloading. More than one method is having the same name but different क्या है, but different number of parameter or the type of parameter, that is overloading. Now in runtime polymorphism, as I said that runtime polymorphism is achieved through overriding. So what is overriding? So overriding is runtime polymorphism when more than one method having the same name, number of parameters and the टाइप ऑफ पैरामीटर्स. ओवरराइडिंग में क्या है, मेथड नेम तो सेम है ही पर टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है और पैरामीटर्स की टाइप भी सेम है. वो कैसे अचीव करेंगे वो ओवरराइडिंग में देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया. ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग. ओवरलोडिंग में क्या है, मेथड नेम्स आर सेम बट टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर एंड देयर टाइप्स आर डिफरेंट. बट ओवरराइडिंग में क्या है, मेथड नेम, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर ऑल आर सेम. नाउ फोर्थ पॉइंट इज compile time polymorphism is achieved by function overloading and operator overloading, but runtime polymorphism is achieved by overriding. Overriding में क्या यूज होगा, virtual functions and pointer. So next one is compile time polymorphism provide fast execution as it is known as the compile time. fast execution कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरली पता होता है, कंपाइल टाइम पे ही पता होता है कि कौन सी मेथड कब कॉल होने वाली है, ठीक है. बट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स स्लो एग्जीक्यूशन एज इट इज़ नोन एट द रन टाइम. रन टाइम पे ही पता चलेगा कि कौन सी मेथड कब कॉल होने वाली है, ठीक है. नाउ लास्ट वन, it is less flexible as mainly all the things execute at the compile time, ठीक है.
एंड कंपाइल टाइम पे ही सभी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। इंटरनल चीज़ें जो है वो कंपाइल टाइम पे, लाइक मेमोरी एलोकेट होना, मेमोरी एलोकेट होना, वैल्यू स्टोर होना, ठीक है, तो वो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट रन टाइम पे ही भी सब पता चलेगा, तो वो मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, as well as we also learn the difference between compile time polymorphism and runtime polymorphism, right। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अभी से यूनिट 3 स्टार्ट हुआ है, तो आप अभी भी बोल सकते हो, ठीक है, कि नहीं समझ में आ रहा है, देन आई कैन एक्सप्लेन इट बाय अनदर मेथड। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, then you can message me. Clear? Thank you.